गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टॉपिक हमने लिया था प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी में लास्ट करा था एल्गी पर। द एल्गी इज़ कॉमनली कॉल्ड, आप जानते हैं, शैवाल, या आपने देखा हो नम स्थानों पर पाई जाने वाली ग्रीन कलर की प्लांट, वो कहलाते हैं एल्गी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। The father of modern algology is called M.O.P. Iyengar. Okay. Next इस मोस्ट कॉमन करेक्टर जो हैं एल्गी के, वो मैं आपको बताता हूँ। इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट chlorophyll. Different types of chlorophyll is present in algae. Then it discussed in classification and formed thallus-like plant body. Thallus lacks vascular tissue and no embryo formation. Okay, that is called characters. Next, habitat. Algae is found in fresh water or marine water. Freshwater algae present in ponds, lakes, pools, etc. And marine water algae present in formed seaweeds. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी एंड डिफरेंट टाइप्स, जैसे रेड एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया, मेराइन एल्गी है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट एल्गी, जैसा मैं आपको अभी बताया भी था आपको, करेक्टर्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इन इंटरमीडिएट सिलेबस इट क्लासिफाइड डिवाइड इनटू 3 टाइप्स: क्लोरोफाइसी, Phaeophyce or Rhodophyce. Chlorophyce is present in green algae. Example: Eleutheryx, Spirogyra, etc. Phaeophyce called brown algae. Example: Fugus. And Rhodophyce or red algae. Example: Porphyra, और मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया Polycyphonia. That is, classification is finished, but main part is reproduction. It takes place by 3 types: first vegetative, second asexual and third sexual. कल भी आपको बताया था, उससे पहले भी आपको, जब मैंने रिप्रोडक्शन स्टार्ट करा था तब भी आपको बता चुका हूँ। These are of 3 types. Vegetative reproduction mostly found in green algae. Such as Eleutheryx, Spirogyra, etc. The thallus break into small fragments. Then each fragment is developed into new algae or new thallus formed green algae. Next heading, asexual reproduction. In this process formed motile or non-motile spores, 2 types. These are of following types. First heading, zoospores. Zoospores is a motile spores. These bigger size or a smaller size, bigger size is called macrozoospores and a smaller size microzoospores. Macrozoospores is formed 2 to 4 and its life cycle is separate and it develop into new thallus. Microzoospores is formed 2 to 32 zoospores and
each formed in a vesicles. Vesicle is burst. It released in plant and formed new thallus, new algae called by zoospores. Next, aplanospores, non-motile spores and thin-walled spores called aplanospores. It develop in lacking of water. Aplanospores, it is present in favorable condition, then formed new algae. Next heading, hypnospores, thick-walled hypnospores and develop in unfavorable condition. It formed new algae. And last, asexual reproduction is akinete, thick-walled spores and lacking of water present in a cell. It is rounded shape and thicker than it favorable condition formed a new spores and developed a new thallus. Okay, and thank you for watching.